Assalamu alaikum. So today we are going through a very important past paper question, which is a question from 2019 February March 4-2. Question number 3. This is from Equilibria chapter basically. Let's read the statement and see how it goes. This is an important question, by the way. So reading the full statement is always very important and highly recommended. So question number 3A. Use the mathematical expression to define the following term. We need to use the mathematical expression, right? So we know that the expression for pH is negative log into concentration of the hydrogen ion. So you can write the mathematical expression like this. And the second is Ka. We know that Ka is always written for weak acid, or weak acid आपके पास Ha है. Let's write its ionization first. Weak acid partially ionized होते हैं, producing hydrogen ions and anion. So we can write the Ka then. Ka would be H concentration of product over concentration of the original acid. So you can have 2 marks by writing this expression. So part 2 of the same question. Write equation to show how the buffer solution consisting of a mixture of HA and Na controls the pH when acid or alkali is added. So we know that whenever a buffer solution is a solution that controls the pH when a small amount of acid or alkali is added. So when you will add small amount of acid or alkali, the pH does not changes. So what acid do we have here? Like acid, इसमें हमेशा weak acid होता है. So HA is the weak acid. It will dissociate producing hydrogen ions and anion as well. देखो आपने इसी में एक salt भी add किया. When the salt does contain the same ions as well, which are anion. So that mean which are A negative उसमें भी है. तो इसका मतलब इस solution में you have huge amount of anions A negative, and since it is a weak acid तो ये partially ionized होगा, तो HA भी बहुत ज़्यादा amount में है. So let's see, हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं. एसिड ऐड किया H प्लस आइन. When you've added hydrogen ions, so hydrogen ion आपने प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो क्या होगा, जो भी आप H आयन ऐड करोगे, दे विल रिएक्ट विद द एनाइन एंड दे विल प्रोड्यूस एसिड, द वीक एसिड. सो pH डज नॉट चेंजेस, क्योंकि ये तो वीक एसिड है, इसने वीक एसिड प्रोड्यूस किया विच विल नॉट आयोनाइज, पार्शियली आयोनाइज. दैट मीन H आयंस जो हमने ऐड किए थे उसने खा के उसको रिमूव कर दिया लेफ्ट साइड पे. अब हम उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड किए. सो हाइड्रोक्साइड आयन जब हमने ऐड किए तो फिर क्या हुआ, व्हेनेवर यू ऐड हाइड्रोक्साइड आयन तो एसिड रिएक्ट्स, HA वुड रिएक्ट to produce anion A negative and water is produced. So basically again जो भी आपने हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड किए उन्होंने एसिड से रिएक्ट किया और वो the reaction goes in the forward direction when you will add hydroxide ion, and it will go in the backward direction when you will add hydrogen ion. So these two equations, this and this, you will get 2 marks. So this part B is actually very important. और इसके मुझे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारी क्यूरीज भी आ रही थी कि सर प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दें. और लेट्स सी हाउ इट गोज. दिस इज अ क्वेश्चन विच इज पार्ट बी. व्हेन क्लोरीन डिसॉल्व्स इन वाटर, फॉलोइंग रिएक्शन occurs. Chlorine is added to water. You can see we produce HClO, H positive ions and Cl negative ion, which is of course HCl, and this is HClO. So 2 different acids are produced. One is HCl, which is a strong acid, HClO considered as a weak acid. When a solution of chlorine is used for the water purification, the pH of the solution of chlorine is kept near 7. So जब हम इसमें water purification के लिए इसको यूज करते हैं तो this is information. तो pH उसकी 7 रखते हैं by the addition of a base. तो obviously यहाँ पे तो acid produce हुआ तो वो तो pH low होगी. तो pH को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसने कहा by the addition of base, right? Chlorine is dissolved in water to produce this much volume. So that is of course 1 decimeter cube. So आपने 1 dm cube water में chlorine add कर दिया, and solution containing this many moles of HClO and of same amount of moles of HCl. A buffer solution is then prepared. अच्छा, पहले आपने क्लोरीन वाटर में डाला और उसमें HCl और HClO बना, एंड दोनों के मोल्स, इसके भी 0.17 मोल्स और इसके भी 0.17 मोल्स आपके बने. देन यू एडेड अ बेस, ठीक है. बफर सोल्यूशन इज देन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 0.2 मोल्स ऑफ NaOH. सो आपने इस सोल्यूशन में ये जो बना था ऊपर, यू हैव एडेड NaOH इनटू इट, राइट. सो और उसके मोल्स आपने कितने ऐड किए, 0.2 मोल्स. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दैट NaOH इनिशियली reacts with HCl. तो NaOH ने HCl से react किया.
calculate the pH of this buffer. HClO is a weak acid. So let's see how we can find the pH. Stay connected. Acha, HCl beta, it will first react with NaOH to produce NaCl and H2O. We know that they react in a ratio of 1:1, which means if you have 1 mole of HCl, that would have been reacted with 1 mole of NaOH. लेकिन HCl के हमारे पास total moles कितने 1.7, तो NaOH के भी 1.7 ही react करेंगे, right? So that means NaOH के 0.17 moles have reacted with HCl. So NaOH के कितने moles बच गए? Total NaOH left. So in total we have 0.2 moles of NaOH, 0.17 have reacted. तो कितने बचे? We are left with 0.03 moles of NaOH. अच्छा, इनिशियली इसने इससे रिएक्ट किया और हमने देख लिया कि व्हेन इट रिएक्टेड विद NaOH इनिशियली, तो NaOH के वी आर लेफ्ट विद 0.03 मोल्स. अब NaOH वुड आल्सो रिएक्ट विद द अदर एसिड which is HClO. So HClO, they would react in a ratio of 1:1. Why? Because NaOH have one hydroxide ion और इसमें भी एक हाइड्रोजन आयन, so definitely they'll produce 1 molecule of water. So ratio is again 1:1. Now we have 0.03 moles of NaOH. HClO के तो 0.17 moles हैं. Can you see this? The moles of HClO given was 0.17 moles. लेकिन हमारे पास NaOH के 0.03 हैं, तो ये 0.03 ही इससे react करेंगे. So this many moles of HClO have been reacted with 0.03 moles of NaOH. So let's find the HClO left. So total moles of HClO was 0.17 minus the moles reacted. So the moles that you are left with are how many moles? Let's use the calculator over here. So I'm sure आप लोग इसको कर रहे हैं मेरे साथ and you all are getting that what I'm trying to connect. This is actually a trap. So you know इसी तरह के questions होते हैं which can make or can change your grade. और हमने इंशाल्लाह इनको practice करना है. So the moles that we are left of HClO are 0.14 moles. Right? So this many moles of HClO left. इसकी हम concentration भी find कर सकते हैं. देखो total volume कितना था? Let's find the concentration of HClO. Concentration का formula होता है N/V. So number of moles 0.14 है. Volume 1 dm cube था. So you have 0.14 mole per dm cube. Right? अच्छा, अब हमने Ka find करना है. Ka के लिए हमें salt की concentration भी चाहिए. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ salt की concentration. देखो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, वो वाले सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का सॉल्ट बना है. सिंस द रेशियो इज 1:1, लेट मी राइट द रिएक्शन ओवर हियर. NaOH react with HClO to produce NaClO and water. तो देखो अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी तो 1 मोल ही बनेगा. इसका मतलब जितने मोल्स आपके पास NaOH के हैं या जितने मोल्स HClO के हैं, सेम मोल्स बनेंगे सॉल्ट के. तो सॉल्ट के मोल्स कितने बने? देखो HClO के कितने मोल्स रिएक्ट किए? 0.03 मोल्स. और इतने ही मोल्स किसके बनेंगे? सॉल्ट के. तो सॉल्ट के मोल्स आपके पास बने 0.03. ये मोल्स हैं. कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, तो वॉल्यूम तो 1 dm क्यूब है. इसका मतलब यू हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन मोल per dm cube. Now we can you plug these values in the formula and we can find the answer. So Ka is basically concentration of salt into concentration of hydrogen ions over the concentration of that weak acid. Ka was given in the question. It is 2.9 times 10⁻⁸. Salt की concentration हमने अभी find की, that is 0.03, and H की concentration what we are looking for. Acid की concentration it is 0.14. You can see that acid is 0.14. So 0.14. Let's do the maths and find the concentration of hydrogen ions. Once you know the concentration of hydrogen ion, you can then plug in the value. So we have just a second. I don't have the calculator, so I have to use this laptop ka calculator. 0.80, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to 9 times 0.14 and then divide it with 0.03, and we have 1.35 into 10⁻⁸. Right? अब इसको आप pH के फॉर्मूला में लगाओ. I mean you can take a negative log of it. So pH
is negative log into concentration of hydrogen ions. I'm sure आपका आंसर ठीक आएगा. So I'm sure सबने इसको सुना, देखा, और दोबारा देखो वीडियो. अगर आपको समझ नहीं आई स्टॉप करके देखें. I'm sure आप सब लोग इसको इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे. See you with the next video. Important question. Allah Hafiz. Thank you.